Good morning, dear students. Today, our topic is complex sentence. As you know, we have already read simple sentence and compound sentence. Small recapitulation. Simple sentence in which there is one subject and one object. Compound sentence in which there are two sentences with two subjects and two objects. Both the sentences are joined by conjunction and, but, or. Okay. Now, complex sentence. What is a complex? Again, we have two types of sentences here. One is called main sentence or main clause. Another is called subordinate sentence or subordinate clause. सबऑर्डिनेट का मतलब भी होता है जो किसी पे डिपेंडेंट हो. अगर मैं आपका सबऑर्डिनेट हूं, वो मतलब कि मैं यहाँ पे डिपेंडेंट हूं. इन a complex sentence, the subordinate clause is dependent upon the main clause. जो ये दूसरा सेंटेंस होता है सबऑर्डिनेट सेंटेंस, ये पहले सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है. इट मीन्स अगर पहला सेंटेंस ट्रू होगा तब इस सेंटेंस का मतलब बनता है. अगर पहला सेंटेंस फॉल्स हो निकलेगा तो इस सेंटेंस का मतलब नहीं बनता है. ये जो दूसरा सेंटेंस होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये मेन क्लॉज या मेन सेंटेंस पे फुल्ली डिपेंडेंट होता है. It is called complex sentence in which the subordinate clause is fully dependent upon the main clause. Clause means sentence. It is called a complex sentence. This complex sentence, in this complex sentence, we use some conditions like if, until, unless. These conditions are used in this complex sentence when the first sentence becomes true, the another sentence will automatically run. Means second sentence will run with the condition if the first sentence becomes true. I will show you some examples through which you will better understand what is a complex sentence. आप लोगों को रुस्तम और सोहराब की कहानी पता है. रुस्तम पर्शिया का सोल्जर था, शील्ड ऑफ पर्शिया था, हर कोई डरता था उससे. यहां पर एक सेंटेंस लिया हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. जब एनिमीज कहते हैं जब तक कि रुस्तम मैदानी जंग में है हमारी जीत निश्चय नहीं है, हमारी जीत पॉसिबल नहीं है, तो हम तभी जीतेंगे जब रुस्तम मर जाएगा. ठीक है. How it has been shown through complex sentence here. Look carefully. Unless Rustam is killed, it is a main sentence. Unless Rustam is killed, it is a main sentence. Our enemies can never hope to see victory. ये बोलते हैं एनिमीज ऑफ पर्शिया. एनिमीज ऑफ पर्शिया कहते हैं जब तक कि रुस्तम नहीं मारा जाता हम जीत नहीं लेंगे, हम जीत नहीं देख पाएंगे, जीत का सहरा हमारे साथ पर नहीं होगा जब तक कि रुस्तम नहीं मारा जाता. The second sentence, enemies can never hope to see victory. Our enemies can never hope to see victory. It is a subordinate clause. It is a subordinate. Subordinate clause is 100% dependent upon the main clause. That is why it is called a complex sentence. So, इनके एनिमीज तभी जीत पाएंगे जब रुस्तम मरेगा. इट मीन सेकंड सेंटेंस तभी पॉसिबल है जब पहला सेंटेंस ट्रू निकलेगा. दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर अनलेस रुस्तम इज किल्ड. जब तक कि रुस्तम नहीं मारा जाता आवर एनिमीज कैन नेवर होप टू सी द विक्ट्री. हमारे जो दुश्मन है, ठीक है, वो विक्ट्री हासिल नहीं कर सकते. सेकंड, if it is sunshine today, it is a main clause. We will go to picnic. It is a subordinate clause. Again, these are two types of sentence here. One is main clause and there is subordinate clause. If
it is sunshine, there is a condition. The condition is if. We will go to picnic. पिकनिक तभी पॉसिबल होगा जब धूप होगी, जब सनशाइन होगा. अगर बारिश होगी तो पिकनिक कहां से जाएंगे? How it is possible to go to a picnic in a rainy day? It is only possible in a sunshine, जब shiny day होगा. So this second sentence means कि पिकनिक जाना है, ये fully dependent है पहले सेंटेंस पे. It should be sunshine today. सनशाइन का होना जरूरी है पिकनिक जाने के लिए. This subordinate clause is 100% dependent upon the main clause. That is why we have written if here. If it is sunshine today, अगर आज सनशाइन होगी, then we will go to picnic. तभी ये पिकनिक जा पाएंगे. So I will recapitulate a little bit that in a complex sentence, the subordinate clause is fully dependent upon the main clause. Okay, we use the conditions like if, unless, until in the complex sentences. I think that is sufficient for today. Thanks.